that it usually happens that if we are solving the paper, it will click in our mind, oh, this news was in 2 years ago. Like in 2020, if we are solving some paper, the news will be from 2017 or 2018. So similarly, this year in 2022, when you will be writing your prelims, so the current affairs most probably will not be from 2021. It will be from 2020, 2019. It will be from those years. So we have picked up some major themes. So it's not like we are covering every big and small points. It's just that we will be covering the major themes which have been the major policy issues which has been in news, and we will comprehensively cover it. So that if say for the past few years, if you are giving prelims and you were not able to solve a few questions of current affairs because of the various reasons, because you were not preparing the comprehensive current affair, or because there were some issues in your preparation. So this time the focus is that we will be covering every aspect of your preparation. Okay, so past 5 years I have covered all the major news that were from 2017 and 18 till 2022. So the major themes have been covered, and they have been compiled in such a format that it will be very easy for you to revise everything. Okay, now one point I want to emphasize in this is that I have skipped all the small news because there are hundreds and hundreds of small news. So we are targeting those current affairs which should be answered, which should not be left at the mercy of luck. Okay, so those are the current affairs that we are excuse me, covering in that in this in today's session. And we will start it. See, there is a little bit of problem because the person who has created the link, they forgot to. Okay, chalo. So we will start it, and it's a request because right now the mic is not automatically turning off for the students who are joining the session. So it's a request that please keep it turned off so that it won't disturb the other students. Okay. So I hope that the screen is visible now. So the first is polity. Now, when I started teaching polity, I told you a few things about polity. The first was that in polity, there are 3 to 4 types of questions that are asked. Okay, the first question is your philosophical polity. So philosophical polity, we have covered Indian Constitution at work and political theory. Plus, I have also shared 10th class notes, NCERT notes. So you can read them also. So it will cover your philosophical part. Now, second is constitutional part. जो constitutional part होता है, obviously it is your Lakshmikant or any standard book that will be covered by it. And the third is the constitution at work. Matlab when it is working, it is in action. So it is the current affair part. So we will be covering this aspect. We have covered this aspect. We have covered some part of this aspect in our rapid revision classes. And now we will be covering this aspect of the polity. Okay. Chalo, we will start. So the first theme that I have picked up is Indian Constitution at action. It means that when Indian Constitution is working in the society. Okay. So the first issue always is of reservation. So the first issue that came in reservation these years was private sector reservation. Why? Because Haryana government, they bought 75% quota for locals in private job. So remember this thing, you can only bring quotas, regional quotas only in private jobs, and you can never bring it in government jobs. Okay, in public sector, you cannot bring it because it is completely prohibited. And the only body which can make laws in public sector, in public like if you want to give reservation to a local candidate in public sector, then only parliament can make law for it. State legislature cannot make law for it. So, so the reservation is for private sector. Now, first of all, Haryana is not the first state. Isse pehle Maharashtra, Andhra, MP, they have also bought the similar act. Okay, so the issue with this is that it enforces the son of soil theory. Son of soil theory simply means that those who are born in a particular land have the first claim on the resources. Okay, so if a person is say from Maharashtra, so they will have the first claim over the resources of Maharashtra, or in the same way other people. Okay, so this reinforces the son of soil theory. Now
is now you will say because it is against the Article 16, okay, because Article 16 does not allow such kind of discrimination, right? However, Article 16 jo hai, it prohibits states from discriminating on the basis of place of birth or residence. That is true. However, there is an exception in Article 16(3), okay, which allows Parliament to prescribe requirement of resident for particular job, but it is only Parliament which can do that, not state legislature, okay. So this, because Article 16 is correspondent to public employment, matlab public employment simply means government job, okay. So all the articles of constitution of Article 16 relates to government job. So nowhere it has been said that in private sector you cannot reserve seat for local candidates. So in that context, Haryana government, it has bought the quota, okay. Next is subcategorization of OBCs. Now, OBC reservation, it has been a very volatile issue. So what was the journey of it? So first was that when original constitution was made, the reservation was extended only to scheduled caste and scheduled tribes community, okay. But there was a massive section of society which was not in the bottom and which was not in the top. It was in the middle. So they all, and it formed the bulk of the country. It formed the bulk of the population of the country, okay. So it formed around 52%. See, whatever questions you will have, just write it down in a pen and paper, and we will take all the question after this session is ending, okay, at the end of the session. So around 52% of the population lives in, it is in OBC category, okay. So the first backward commission, class commission, was formed in 1953 under Kaka Kelkar, okay. So nothing was, kuch bhi is pe decision nahi liya gaya tha. Then the second backward class commission was formed in 1979 under BP Mandal. So Mandal is very famous. Mandal commission is very famous. And 1992 mein, VP Singh government, VP Singh was the Prime Minister of India at that time, and he implemented the Mandal judgment. Okay, so what he said that 27% of the seats will be reserved for the OBC category. Okay, after this judgment was bought, or sorry, after this reservation was bought, people from general category, they went to Supreme Court, and in Supreme Court they gave a judgment that is called Indira Sani judgment. Okay, we will discuss about that. But the context is because recently the present government, they have formed a commission called Justice Rohini Commission, and it has been formed to subcategorize the OBC. Now, what is subcategorization? Simply, it means that in OBC there are certain sections which have benefited from reservation, and there are certain sections which have not been benefited for reservation. So जो reservation है, it should spread evenly. मतलब ये सबको equally benefit करना चाहिए. It should not be confined to just one class in OBC. Okay. So to further subcategorize the OBCs, Justice Rohini Commission has been formed. It has not given its recommendation as of now, and its term has been extended for 6 more months. Okay. Now, Indira Sani judgment. So what was the judgment of it? First, they said that there will be a creamy layer. Now, remember, there is no creamy layer in SC and ST category, but only for OBCs. Okay? So it simply means that those who are at the good position of the society in OBC category, reservation will not be extended to them. Then second is they introduced 50% cap, which means that out of 100 seats, only 50 seats can be reserved, and 50 will be unreserved, because अगर हम 50 से ज़्यादा reserve करेंगे, then it will lead to reverse discrimination. Okay. However, recently जो अभी EWS reservation आया है, it has broken that limit. Okay. Now the reservation is 60%. Okay. But that 10% which has been reserved is for general category. And then third, they said that there will be no reservation on promotion. So you cannot give reservation on promotion. However, for scheduled caste and scheduled tribe, it is possible to give reservation promotion, but not for the OBC category. Okay. Now, Justice Rohini Commission, why and how it has been formed, and what are the legal aspects of it? So if you have read the Constitution, then you will know that it has been formed under Article 340 of the Constitution, which mainly इसका जो aim है, which it is to improve equitability of sharing of benefits among OBCs. कि मतलब जो OBCs हैं, उन पे equally जो
बेनिफिट्स है रिजर्वेशन के, इट शुड बी शेयर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद इट विल आल्सो इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लास, व्हिच इज द, जो कि आर्टिकल 340 का वर्ड भी है ना, कि यू हैव, प्रेसिडेंट विल फॉर्म अ कमीशन व्हिच विल लुक इनटू द बैकवर्डनेस ऑफ द क्लासेस, ठीक है। इसके बाद इट विल एग्जामिन द एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितना ज्यादा इनइक्वालिटी है रिजर्वेशन में, एंड देन एक साइंटिफिक सब कैटेगराइजेशन करेगा, ठीक है। सो अभी जो प्रिलिमिनरी न्यूज आई है, जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन है, उस पे ओबीसी का जो डिवीजन है उसको 4 सब कैटेगरीज में बांटा जाएगा, 1 2 3 4, एंड दिस 27% रिजर्वेशन विल बी स्प्रेड अप, लाइक कि जो फर्स्ट कैटेगरी में उनको 2%, सेकंड कैटेगरी को 6%, थर्ड को 9%, एंड जो सबसे बॉटम कैटेगरी है उसको 10%। सो इन दिस वे एट प्रेजेंट जो सब कैटेगराइजेशन है दैट विल ऑकर, ओके। Now, is it new that categorization, does it exist, or that first time it is happening under Justice Rohini committee? So no, it is not new. Around 11 states, like all the southern states, so Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana, and Karnataka, West Bengal, Bihar, they already have subcategorization. Okay, so that they have subcategorization for their state government jobs. Okay, so this will be done for central government jobs. Then so how the backwards will be divided? They will be divided into backward class, more backward class, and extremely backward class. Okay, the next is 102nd Amendment Act. This is also related to your NCBC, so National Commission for Backward Classes. So till now it was statutory commission. Statutory means it was formed under law, it was not formed under constitution. Okay, but now it has been converted into constitution under article 102nd Amendment Act, जिसपे नया आर्टिकल ऐड किया गया है, which is article 338B. Okay, now what is the main function of it? Mainly to look into the grievances of backward classes. So that is the first amendment that has been done under 102nd Amendment Act. Then it has added another article, which is 342A. Now what does it says? It says that it gives powers to president to notify a class of जो एक क्लास है उसको SEBC, मतलब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, बट द पावर टू अल्टर दैट लिस्ट, सेंटर SEBC लिस्ट, remains in parliament. So simply what it means is, because it creates a lot of confusion, कि जो फर्स्ट लिस्ट बनेगी of SEBC, means socially and educationally backward classes, that will be formed by president. However, जो further उस पे amendments होंगे, है ना, those amendments can only be brought by पार्लियामेंट, ठीक है। हाउएवर अब इसको उल्टा किया जा रहा है, इफ यू हैव फॉलोड न्यूज़, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उन्होंने 127th अमेंडमेंट बिल लाया है, जिसपे दे हैव रिस्टोर्ड द पावर ऑफ स्टेट्स टू आइडेंटिफाई ओबीसीज एंड इंक्लूड इट इन रिस्पेक्टिव लिस्ट, ठीक है। तो अभी क्या था कि जो ओबीसी की पावर थी, जो पावर थी to frame a committee as OBC, that was given to president, and parliament can only alter it, but now there will be a separate state list, so they are restoring the power to states so that they will be able to form their own separate OBC list. Okay, now why this was done? It was done because जो सुप्रीम कोर्ट था, जो मराठा रिजर्वेशन है, मराठा कम्युनिटी लिव्स इन Maharashtra, and they, for the long time they are asking for reservation. So in that judgment, the Supreme Court has ruled that only president can recommend any community as OBC, and that too on the recommendation of NCBC. Okay, so जो Supreme Court है, it has centralized the power of declaring OBC to Parliament and President. Okay, but जो state government है, they are again decentralizing it to state governments. Reason being simple, politics. Okay. So this was all about OBC reservation. Now the second reservation is about person with disabilities. Okay. Now ये reservation जो ये constitution में नहीं है, it was given under जो एक law है, Right of PWDs Act 2016, मतलब Rights of People with Disabilities Act 2016. Now it provides 4% reservation for people with benchmark disability. ठीक है? Now what is the benchmark disability? How you will decide that how much disabled a person is? Simply that person should be not less than 40% of the specified disability. तो एक limit दी जाती है, and that person should be more than 40% disabled. So if there is, अगर visibility का criteria है, then more than 40% that person should not be able to see. Okay, so that is the criteria, and there are 21 disabilities that has been covered under this act. ठीक है? Now
Why this act is of 2016, but why it was in news? Because in Siddha Raju case, it was in 2020, Supreme Court has held that jo people with disabilities hai, they do not just have right to reservation, but they also have right to promotion as well. Okay, so this is an important point. Apart from scheduled caste and scheduled tribes community, the right to reservation by Supreme Court has been extended to PWT community as well. And as I told you that it does not exist for OBC community. Okay. Now, next, reservation in legislative bodies. Okay, so the context was 104th Constitutional Amendment Act 2020. So what it was, that it is a routine amendment. Okay, when we discussed about amendment, we read that there are some routine amendments in the Parliament. Okay, so this is one of that, in which jo reservation tha, originally it was for just 10 years, है ना? Reservation for SC and ST community in Lok Sabha and State Legislative Assembly. Okay, so there is no OBC reservation in Parliament or State Legislative Assembly. So originally it was just for 10 years, but over the years, it has, obviously, because it is a very political issue and it is also an issue of representation. So every year it has been extended for 10 years. Okay, so because it was expiring, so it has again extended for 10 years, and that was done under 104th Constitutional Amendment Act. Okay, now the hallmark of this act was that it did not, so did not is important, it did not extend reservation to Anglo-Indian community. Okay, Anglo-Indian community means the one whose father is of European descent and mother of Indian descent. Okay, so earlier there was reservation for Anglo-Indian community, now that is not there. Okay, so they have amended Article 334 to extend reservation only for SC and ST communities. Till when? 2030. Because in 2020 the reservation was expiring, so they have extended it for 10 more years. Okay, so जो दो एंग्लो इंडियंस होते थे लोकसभा में and one जो एंग्लो इंडियन होते थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, now this won't be there. Okay, so there is no reservation for them. So no member of this community has been nominated in Lok Sabha. 2019. So even though this Lok Sabha was before the amendment was brought, there has been no community from this. There is no nomination of this community. Okay, so they are not present at Lok Sabha right now. Now, because this amendment it also deals with state legislative assembly, so it needs to be ratified by not less than half of the states, and with half of the states, what majority they will have to ratify it? Simple majority. Okay, simple majority means 50% plus one of those present and voting. Okay, chalo. Next, reservation in promotion for scheduled caste and scheduled tribes. So because earlier it was not there, so it was in 77th Constitutional Amendment Act that reservation in promotion was provided to SC and ST community. Now this reservation was in news because there was a case that is called M. Nagaraj case. Okay, so in that, the Supreme Court hai, it allowed reservation in promotion. However, उन्होंने बोला कि there are certain conditions under which it will be allowed. So what were the conditions? First, you should present a quantifiable data on the backwards of SC and STs. आपको एक quantifiable data दिखाना पड़ेगा कि they are backward. Second, you have to show that they are inadequate represented. मतलब उनका representation सही नहीं है. You will have to show it to them. And then overall जो administrative efficiency है, it should not be affected because of it. However, because government was not able to present the quantifiable data, so Supreme Court in Jarnail Singh case has said that it's okay, you can extend the reservation without the need of to collect quantifiable data. And they have also asked center to introduce creamy layer for SC and ST community, because they have seen that even among scheduled caste and scheduled tribes, the benefits of reservation has not been equally distributed. Okay, so those who are already well off in these communities are taking the benefits of reservation. Okay, so to make it more equitable, we need this kind of criteria for this community as well. Next is EWS reservation, so economically weaker section reservation. So why it was in news right now? Because जो center है, it told Supreme Court कि states are not forced to give EWS reservation. It is their own
prerogative, है ना? So center is not forcing state to give EWS reservation. So they can decide on themselves whether they will be extending 10% reservation to their respective jobs and admissions. ठीक है? इसके अंडर लाया गया था ये अंडर 103rd Constitutional Amendment Act 2019. इस पे उन्होंने आर्टिकल 15(6) and 16(6) दो चीजें ऐड की थी, which will allow 10% seats to be reserved for economically weaker section. Remember this thing, only from general category. So EWS students should only be from general category to get benefit of this reservation. ठीक है? Now this will be in addition to present reservation scheme. So it means कि जो 50% reservation है, that will exist. It will take 10% more of that. So overall reservation will be 60%. ठीक है? Now this will not apply to minority educational institutes. ठीक है? Like other reservations. And then center has also said that it has no role in deciding the reservation policy of states, which they are free to follow. So center is not forcing state to follow any kind of reservation policy. Now, reservation is not a fundamental right. It was in news around 2.5 years ago. So Supreme Court said that there is no fundamental right to reservation. So reservation is provided under Article 15(4) and 16(4). So 15(4) for educational institutions and 16(4) for public employment. है ना? So Supreme Court has said that both of these are in the nature of enabling provision. Enabling provision means कि ये ऐसे बोलते हैं कि state can do this thing, है ना? It is not a kind of directive to state कि they will have to provide reservation. It only says कि just for the representation they can provide reservation to these communities. So these are an enabling provision. ठीक है? So it rests on the discretion of state government. So that's why it has said that reservation is not a fundamental right. So it is settled in law that state cannot be directed to give reservations in appointment. So you cannot force states to give reservation. So that has been the judgment of Supreme Court. Okay. Next is bill to include more tribes in ST category. Okay. So recently, around 3-4 years back, there was a bill which was called Constitution ST Order Amendment Bill 2019, which was mainly to give ST status to a few tribes of Karnataka. Now, which were the tribes? Parivara tribe, Talwara tribe, and Siddhi tribe. So please read a little about these tribes. They may ask about these tribes in exam. So first of all, we have read this thing कि जो constitution है, it does not defines a lot of things, but you should remember one thing, it defines what is a scheduled tribe. Okay, so Article 366 of the Constitution defines what is a scheduled tribe, and it says that those deemed under Article 342 to be a ST for the purpose of this constitution. ठीक है? तो Article 342 में those who will be considered as scheduled tribe will be the definition of scheduled tribe. Okay. Now Article 342 it prescribes the procedure for specification of ST कि आप कैसे किसी को ST घोषित कर सकते हो, है ना? So the specification for ST for any state or UT for any state or union territory it will be notified by the president, okay, in consultation with that state government. Later on, those orders can only be amended by Parliament and not President, as we discussed earlier also. The first list it is prepared by President, but later on it can only be amended by Parliament. Okay. Now, what is the criteria? How we will decide that which of the following is a scheduled tribe community? So simply remember this thing कि ये criteria constitution में नहीं दिया है, but conventionally follow किया जाता है. They have primitive traits, they have distinct culture, they have geographical isolation, shyness of contact, है ना? So they are not very much developed. Their population is declining or is in a steady phase. So these are some of the criteria for determining the scheduled tribe community. Okay. Now, it has also prescribes listing of states in state and union territories UT basis and not on all India basis. Okay, so it simply means कि जो scheduled tribes हैं, they will be given that status on the basis of state, not on the basis of all India. So for example, suppose there is one tribe called X. So it may be ST in one state and it may not be ST in another state. है ना? So that is the meaning of this. So this was everything that was in news related to reservation. Okay. Now other things related to constitution which has been in news we will discuss now. So the second thing जो usually news में रहती है, it is about your rights. ठीक है?
जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से 35 उनके बीच में। सो वट एवर इज हैज बीन इन न्यूज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज एंटी कन्वर्जन लॉ, ठीक है। सो ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज स्टेट्स लाइक एमपी, हरियाणा, कर्नाटका, दे हैव बॉट अ लॉ इन विच दे हैव प्रोहिबिटेड फोर्सफुल कन्वर्जन। ओके, सो लॉ मिनिस्ट्री जो है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे हैव सेड दैट इट इज अ प्योरली स्टेट सब्जेक्ट्स, सो पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट इन दिस मैटर, ठीक है। तो जो आपके कन्वर्जन वाले इश्यूज हैं, इट हैज बीन केप्ट अंडर स्टेट लिस्ट, सो पार्लियामेंट विल नॉट बी मेकिंग एनी लॉ इन इट, एंड स्टेट लॉ मिनिस्ट्री हैज क्लैरिफाइड इट। Now, courts have also made it clear that Article 25(1), which is about your freedom of conscience, freedom to profess constitution, it does not grant fundamental right to conversion, है ना? You can profess your religion, but you do not have the right to convert this anyone to your faith. And forced conversion is anyways banned because it will impinge on the freedom of conscience, which is already given in Article 25. Okay, so a lot of and it has also made it clear that they fall in list 2, मतलब जो state list है 7th schedule की, उस पे, so मतलब only state government can make laws on this, ठीक है। इसके बाद there has been certain cases also, like one famous case was Sarla Mudgal case. In that Supreme Court says that conversion to Islam just for polygamy is not valid. Okay, so there was one person who wanted to marry, he was already married and he wanted to marry another person, so he converted to Islam because in Islamic personal law polygamy is allowed. So Supreme Court invalidated his conversion, and it clarified that conversion to Islam just for polygamy is not valid, ठीक है। So that is first thing related to anti-conversion law. Second is internet as basic right. Okay, right now we are using internet, है ना, to communicate with each other, to teach you. So ऐसा क्यों न्यूज में था? Because Supreme Court ने, there were a number of petitions जो Supreme Court में थी, where they challenged the restriction imposed on internet in Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर में internet services restricted है, especially जो 4G services हैं वो, ठीक है। Now under what law they are suspended या restricted? So there are 3 laws. First is Information Technology Act 2000, which forms the whole architect of your जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर है, जो आपका साइबर स्पेस है, उसको, ठीक है। द सेकंड इज सीआरपीसी 1973 एंड थर्ड इज टेलीग्राफ एक्ट 1885, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि फ्रीडम ऑफ स्पीच थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट इज अ fundamental right, ठीक है। So you can type anything or you can discuss anything you want in your internet, that is your fundamental right under article 19(1)(a). The second thing, it also said that freedom to commerce, because suppose Flipkart, Amazon, like that, so that is also from internet, it is your fundamental right under article 19(g), ठीक है। So they have said that certain, it has not said that internet is a fundamental right, but it has said that certain services that you get from internet are fundamental rights, ठीक है। So जो restrictions हैं, that should follow the doctrine of proportionality. Doctrine of proportionality simply means कि whatever crime you're doing, the punishment should be commensurate to that. मतलब कि आपका अगर आपका क्राइम छोटा है तो आपकी पनिशमेंट भी छोटी होनी चाहिए, अगर आपका क्राइम बड़ा है तो आपकी जो पनिशमेंट है इट शुड आल्सो बी बिग। सो इट हैज सेड कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरनेट बैन, ठीक है। देन इट हैज आल्सो सेड कि जो सस्पेंशन है फॉर इनडेफिनिट पीरियड, इट शुड नॉट बी परमिसिबल, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है, बट एक फहीमा शरीन केस था, केरला हाई कोर्ट के पास था ये केस। इस पे हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो आपका राइट टू इंटरनेट है, इट इज योर फंडामेंटल राइट, और जो राइट टू इंटरनेट है, इट कम्स अंडर योर राइट टू प्राइवेसी, एंड राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर योर आर्टिकल 21, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट, इट हैज डिक्लेयर्ड दैट योर इंटरनेट इज योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज सेडिशन। अब सेडिशन ऑलवेज इट इज इन न्यूज की, कई बार जो जर्नलिस्ट है उनको क्या कहते हैं, आपको जेल में डाल दिया जाता है इन द नेम ऑफ सेडिशन, ठीक है। तो सेडिशन होता कहां से और कहां से आता है? पहली चीज तो सेडिशन इट फॉल्स अंडर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड, और जो थॉमस मैकाउले थे ब्रिटिश एरा में, है ना, he is a very famous gentleman, you know his name from history. So he was the one who bought sedition, and it is a non bailable offense, ठीक है। तो आपको बेल वगैरह नहीं मिलेगी if you are under it. So what is sedition? So इस पे definition ये है कि any person who attempts to bring hatred against government. So remember, the word is government, the word is not state, the word is not nation, the word is government. So anyone who tries to bring hate against the government by words, signs or visible representation, they will be brought under
sedition, ठीक है. So there has been certain important cases like केदारनाथ केस, कन्हैया कुमार केस, जिसपे कोर्ट जो है उन्होंने रिडिफाइन किया है सेडिशियस एक्टिविटी को, और उन्होंने बोला कि इट कैन नॉट जस्ट बी एनी आर्बिट्रेरी वे इन विच यू कैन पुट सेडिशन, बट देयर शुड बी अ विजिबल डिसरप्शन इन पब्लिक ऑर्डर, there should be an attempt to violently overthrow a lawful government, or there should be a threat to security of state. Okay, so there should be an open visible threat of violence against state or against society. In that case only you can put seditious charges. ठीक है. Next is minority educational institutes, जैसे आपका जामिया मिलिया हो गया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई. So these are all minority educational institutes. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेट होता है इट कैन रेगुलेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, इट जस्ट डज नॉट मीन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. तो जो स्टेट होता है इट कैन रेगुलेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इन नेशनल इंटरेस्ट. ओके, सो देयर इज अ power it has given to state to regulate the minority interest. Okay, now कहाँ पे जो regulation है ये required है, where you can regulate it in the appointment of teachers, it is permissible if it is intended to ensure excellence. मतलब कि अगर state के regulation से if the institute is becoming more better, है ना, so in that case also the regulation is permitted. Now टीएमए पाई केस था. टीएमए पाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 इज अबाउट द जो माइनॉरिटीज को राइट्स मिले हैं कि दे कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सो दे आर नॉट एब्सोल्यूट. Okay, in fact no fundamental right is absolute except for one or two like untouchability. Even there are certain exceptions. Okay, so that has been said in TMA Pai case, and you should remember that constitution does not defines minorities. ठीक है. So which act जो है वो control करता है इसको? So National Commission for Minority Educational Institutions Act जो है it establishes a body जिसको बोलते हैं National Commission for Minorities in Educational Institution. ठीक है. ये क्या है? It is a quasi judicial body with a power of civil court. मेनली जो आपका एफिलिएशन होता है कि if any educational institute, whether it is a minority institute or not, it is discussed by NCMEI. Simple. और जो इनका कैंसल या प्रिजर्व करना है राइट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, ये यही बॉडी करती है. ठीक है. Now it defines a minority institutes कौन होते हैं, तो it defines is that those which are established and administered by minorities. Now minorities कौन है? सिंपल सी चीज है कि जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, उस पे देयर आर 6 माइनॉरिटीज इन दिस कंट्री. ठीक है. कौन कौन से? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स. जैन्स को 2004 में ऐड किया गया था. ठीक है. नाउ देयर हैज बीन नो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. रिमेंबर दिस थिंग कि जो एक्ट है उसके अंदर देयर हैज बीन नो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दैट हैज बीन नोटिफाइड टिल डेट. ठीक है. नेक्स्ट जो है ये जो इंस्टीट्यूट्स है, मतलब जो आपके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं, दे कैन रिजर्व अप टू 50% सीट्स फॉर देयर कम्युनिटी. ठीक है. तो अगर कोई सिखों के द्वारा बनाया गया या कोई मुस्लिम्स के द्वारा कोई भी, इफ दे हैव मेड एनी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, दे कैन रिजर्व अप टू 50% सीट्स फॉर देम. देन रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15, मतलब जो आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी रिजर्वेशन है, इट डज नॉट अप्लाई टू देम. रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है. और फिर जो आरटीई एक्ट है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसने एक मैंडेट दिया था कि जो 25% सीट है any educational institute, whether it is private or public, it should be reserved for economically weaker section. So even that does not apply to minority educational institutes. ठीक है. तो ये points याद रखना, they are very critical points. Now defining minorities, ये क्यों definition में है? Again this has also been in news. It is a very controversial issue because जो constitution है it does not defines minority. कि कौन माइनॉरिटी है कौन नहीं है, जो हमारा संविधान है वो डिफाइन नहीं करता है. तो किसने डिफाइन किया हुआ है? एज वी हैव डिस्कस्ड, जो गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन दे हैव डिफाइंड इट. और डेफिनेशन किसके अंदर आई है? अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992. ओके. सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट डिफाइंस की हु विल बी माइनॉरिटी एंड हु विल नॉट बी माइनॉरिटी. ठीक है. जो स्टेट्स है, कैन दे डेजिग्नेट समवन एज माइनॉरिटी और नॉट? दे कैन आल्सो डेजिग्नेट, दे कैन डेजिग्नेट स्टेट माइनॉरिटीज. ठीक है. तो अगर किसी स्टेट पे कोई माइनॉरिटी है, देन दैट पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी इन दैट स्टेट, may not be declared minority in the national government. ठीक है. So for example, जैन्स जो हैं,
they were recognized as minority in 11 states before being notified as national minority in 2014. ठीक है, तो 11 states में पहले इनको minorities माना हुआ था, but 2014 में national level पे इनको minority मान लिया गया है. ठीक है, now reason being कि जो बहुत सारे PILs follow डाली गई हैं, public interest litigation डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट पे, जिसपे उन्होंने ये बोला है कि जो minorities हैं they should be defined under state level and not national level. ठीक है, so that इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे जैन्स है ना, जैन्स को अगर माइनॉरिटीज डिक्लेयर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो पूरे नेशनल लेवल पे किया गया है. ठीक है, कि बिकॉज दे आर माइनॉरिटी इन नेशनल लेवल, बट जो सर्टेन PIL से उस पे ये बोला गया कि आप नेशनल लेवल पे माइनॉरिटीज को मत देखो, स्टेट लेवल पे देखो, इवन इन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो इन कॉन्स्टिट्यूशन यू शुड नॉट सी दैट X community is minority in whole India. You should see that whether X community is minority in particular state or not. ठीक है, इसका रीजन क्या है कि अगर ये चीज एक्सेप्ट कर ली जाती है, if this definition is accepted, then जो हिंदू कम्युनिटी है, they are minorities in around 7 to 8 states. So जो benefit है of Article 29 and Article 30, that will be extended to Hindu community as well. Okay, so that's why they are demanding कि जो minority is and they should be looked at state level and not at national level. ठीक है, नेक्स्ट राइट्स इशू में है सबरीमला टेम्पल केस. ये 2018 में जो वर्डिक्ट है उसके कारण था. ठीक है, अभी जो एट प्रेजेंट में व्हाटएवर वर्डिक्ट दैट सुप्रीम कोर्ट गेव इन 2018, इट इज रिव्यूइंग इट. ठीक है, सो ये जो वर्डिक्ट था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक वर्ड यूज किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. इट वाज आस्क्ड इन UPSC मेंस आल्सो. सो व्हाट इट सिंपली मेंट वाज कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल होती है ना, द आत्मा जिसको बोलते हो आप. ठीक है, इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द लिटरल सेंस, कि अगर लिटरल सेंस में हम बोल देते हैं कि राइट टू इक्वालिटी है. ठीक है, सो इट इज नॉट कन्फाइंड टू जस्ट कि ठीक है राइट टू इक्वालिटी है, सब बराबर है. यू शुड अंडरस्टैंड द मच लार्जर फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इट ऑल्सो, है ना, कि जो इसका फिलोसॉफिकल अंडरटोन है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मतलब मोरालिटी मीन्स कि द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू एस्टैब्लिश अ कंट्री विच इज इक्वल फॉर ऑल, अ कंट्री which has no kind of discrimination. So you cannot just say कि यार ये तो literal meaning, ये तो लिखा ही नहीं है संविधान में, तो from where we can say कि it will be in this condition. Okay, so that's why जो verdict था सबरीमला का with 4:1, so 4 जो male judges थे and 1 female judge, है ना, they digressed. So male judges ने बोला कि women should be allowed in the temple, while the female justice जो थी उन्होंने कहा कि they should not be allowed, है ना. और जो जजमेंट में उन्होंने कहा कि जो बैन ऑफ एंट्री है, इट इज अ काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17. सो दैट्स व्हाई दे सेड कि वुमेन शुड बी अलाउड इन सबरीमला टेंपल. हाउएवर राइट नाउ इट इज रिव्यूइंग इट्स डिसीजन. ठीक है, नेक्स्ट इज डबल जेओपार्डी. सिंपल सा मीनिंग इसका क्या है कि नो पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर द सेम क्राइम ट्वाइस. ठीक है, इट वाज इन न्यूज फॉर सर्टेन रीजन, सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग. इट कम्स अंडर आर्टिकल 2 सेकंड क्लॉज. Next is National Security Act Nsa. It is in always in news because of the recently जो MP और UP की गवर्नमेंट है उसने कई सारे क्रिमिनल्स पे they have imposed National Security Act Nsa. ठीक है, so Nsa क्या है? It was formed in 1980 and it provides for preventive detention, है ना. preventive detention जो है हमारा constitution भी allow करता है. ठीक है, so under preventive detention a person can be if they are prejudicial, मतलब they can attack the, मतलब they have not committed the crime but there is a possibility that they may commit the crime, तो उसके उस पे अगर डिफेंस पे या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे या लॉ एंड ऑर्डर पे if they are threatening any of these things, so they can be put behind the bars. अब कब तक डाल सकते हो आप जेल में? लगभग 3 months तक. ठीक है, इनफैक्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस फॉर 6 months यू कैन पुट देम बिहाइंड द बार. ठीक है, एंड आर्टिकल 22 जो है उस पे आपको राइट्स प्रोवाइड करता है अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन. ठीक है, तो ये यू कैन लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट व्हाट काइंड ऑफ राइट्स आर प्रोवाइडेड टू दोज हु हैव बीन डिटेन्ड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस. ठीक है, तो एनएसए इज दैट काइंड ऑफ लॉ. तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं. ठीक है, अपने अपने. Next is right to privacy. Right to privacy, it was under पुत्तास्वामी judgment, KS पुत्तास्वामी judgment. इस पे 9 जजेस की बेंच बैठी थी और उन्होंने बोला कि जो right to privacy है, निजता का अधिकार जिसे बोलते हैं, it is an intrinsic part of life and liberty and it is under Article 21. ठीक है, so now what includes right to privacy? It includes preservation of personal intimacies, sanctity of family life, marriage, procreation, sexual orientation. ये जो सब चीजें हैं, you have the right to keep it private, है ना. You and the state and the private companies,
they have the legal obligation now to keep it private. ठीक है. It also includes right to be left alone. मतलब कि जो ट्रोलिंग वगैरह इंटरनेट पे होती है, ये that should not be done, है ना. But remember one thing, that this is not an absolute right. Okay, the state can invade, but it should be on the basis of legality. So your central government or state government, they can infringe on your right to privacy, but it should be legal, है ना. कि like if you're really threatening the security of state or in only such circumstances. ठीक है. Now इसके बाद राइट टू प्राइवेसी में गवर्नमेंट ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट जो था, उन्होंने ये भी बोला कि द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो प्लेस अ रोबस्ट रेजीम फॉर डेटा प्रोटेक्शन, है ना. बिकॉज जो डेटा प्रोटेक्शन है, दैट इज ऑल्सो अ क्रिटिकल इशू, एंड इट शुड प्रोवाइड अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स एंड लेजिटिमेट स्टेट कंसर्न्स. मतलब आपका राइट टू प्राइवेसी जो है, विच इज योर कंसर्न, उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट स्टेट के जो कंसर्न्स है, स्पेशली जो सिक्योरिटी थ्रेट है, जो आईसिस हो गया या अलकायदा हो गया, so these terrorist organizations operate in WhatsApp and Telegram and other such social media. So state ke bhi legitimate concern hai of security, so that should also be taken into account. ठीक है. Now next is basic structure doctrine. So it is that I have kept it. I won't teach you because this is from your basic Lakshmikant, but you have to read it because जो केशव नंदा भारती थे, he passed away in 2021. ठीक है. तो जो केशव नंदा भारती जजमेंट था 1973 में 13 जजेस ने सुना हुआ था. सो उसके बेसिस पे इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था. इसका मतलब होता है कि जो संविधान होता है, amending the constitution cannot be rewriting the constitution. So there are certain basic feature of constitution, like our constitution is democratic, republic, secular, socialist. So you cannot change these fundamental principle of constitution, otherwise it will tantamount to you are writing a new constitution itself. Okay, so that is the journey that has been kept. So KBC जो आपका केशव नंदा भारती केस था, उस पे they gave this thing, you cannot alter the basic structure. So इससे पहले एक केस हुआ था गोलकनाथ जजमेंट, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट. सिंपली उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हैज नो राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. उस पे इन्होंने करेक्ट किया था ये, है ना, ये जजमेंट केशव नंदा भारती केस पे. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, हाउएवर इट शुड नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, वेलफेयर स्टेट, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी एटसेट्रा. Next is uniform civil code. क्यों context है इसका? Because it is always in news, है ना. For one reason or another, it is always in news. So what it simply means कि we have a uniform criminal law, है ना. So suppose if a Hindu or a Muslim or a Christian or a Sikh अगर ये चोरी करते हैं, if they are thief, so all will get same punishment, है ना. There will be no punishment according to their caste or religion. ठीक है. But we do not have same civil laws. ठीक है. So civil laws मतलब the one related to marriage, divorce, inheritance. Now remember one thing कि जो uniform civil code है, if this will come, that does not means कि you cannot marry as per your Hindu, Muslim or Christian or Sikh custom. For Sikhs it is a Anand Marriage Act, है ना. For Hindus it is Hindu Marriage Act. So you can marry as per your own religion. What it simply means that the rights of spouses of families will be similar. Like right now there are no similar laws for certain communities. जो women हैं, they have equal succession right. तो जैसे लड़का है, उसको भी प्रॉपर्टी में उतना ही हक मिलेगा जितना लड़की को. बट फॉर सर्टेन रिलीजन्स, सर्टेन अदर फेथ्स, देयर इज नो सच equitable inheritance right, है ना. So there will be one civil law for all religious communities for their personal matters. Now uniform civil code, it is in article 44 जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उस पे. is it in any state? जो गोवा है, गोवा is the only state with a uniform civil code. ठीक है. Now उसकी जर्नी क्या है यूनिफॉर्म सिविल की? उसकी जो सबसे पहली जर्नी थी, इट वाज इन लेक्स लोकाई रिपोर्ट. इट इज एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, सो रिमेंबर दिस थिंग. इस पे इन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्मिटी इन इंडियन लॉज, है ना, इन मैटर्स ऑफ क्राइम. तो पहले क्या था कि जो क्राइम था उस पे मोहम्मदन लॉ अलग था, हिंदू लॉ अलग था. विद इन हिंदू लॉ जो कास्ट थे वो डिफाइन करता था द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट यू विल गेट. सो लेक्स लोकाई जो था, इन रिपोर्ट जो था, इन्होंने बोला कि देयर शुड बी अ कॉमन इंडियन लॉज फॉर क्राइम. हाउएवर उन्होंने ये चीज बोला कि जो पर्सनल लॉज हैं, दे शुड बी केप्ट आउटसाइड इट. ठीक है. सो दे इवन दैट डिड नॉट रिकमेंड द यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट इट रिकमेंडेड द यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ.
Then Queen Proclamation हुआ था 1859 में, so that was after the revolt of 1857. So it was reviewed by British government because they were interfering a lot in the religious policies of Hindus and Muslims. So they outrightly said that we will promise that we will not interfere in the religion of the people. ठीक है. इसके बाद BN Rao कमेटी बनी थी 1941 में. So they were the first to discuss about codification of Hindu law, which was first brought by the first law minister of India, Dr. B.R. Ambedkar, as Hindu Code Bill, है ना. However, he was not able to pass it. It was later on in 1956 that जो नेहरू गवर्नमेंट थी, it brought it in four laws, and then they were able to पास है. ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है जो सिविल लॉ से रिलेटेड है वो आपका शाहबानो केस, सरला मुद्गल केस एंड डेनियल लतीफी केस. नेक्स्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज. तो जो गवर्नमेंट की, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 है. किस शेड्यूल में है? 8 शेड्यूल में. ठीक है. ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो तुलु स्पीकर है, तुलु इज अ लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन इन कोस्टल कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ केरला. ठीक है. तो जो कोस्टल कर्नाटका है वहां पे तुलु लैंग्वेज बोली जाती है. सो दे आर आस्किंग कि देयर लैंग्वेज शुड बी पुट इन 8th शेड्यूल. ठीक है. सो Article 344(1) deals with the languages. So at present there are 22 official languages. Remember one thing, जो English है, it is not an official language. ठीक है. However, it does not, remember this thing, it does not specify any official language for different states. So the states and they can decide their own official language, है ना. Central government इसको decide नहीं करेगी. Now why they want it to be put in 8th schedule. 8th schedule में अगर कोई लैंग्वेज है तो उसका बेनिफिट क्या होता है? पहली चीज तो इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नेशन. सेकंड, जो साहित्य अकेडमी है, इट विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग बुक्स इन दैट लैंग्वेज. तीसरा है जो एमपीज और एमएलएज हैं आपके, दे कैन स्पीक दैट लैंग्वेज इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. और जो आपके ऑल इंडिया एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे यूपीएससी एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, उस पे कैंडिडेट्स कैन राइट इन दिस लैंग्वेज. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ वन ऑफिशियल लैंग्वेज. नाउ नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव्स. कोऑपरेटिव्स न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसको बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन. ठीक है. कॉर्पोरेशन होता क्या है? कॉऑपरेटिव्स क्या होते हैं? सपोज देयर इज अ विलेज जहाँ पे देयर आर 4 फैमिलीज व्हिच आर प्रोड्यूसिंग मिल्क. ठीक है. अब वो मिल्क को एक जगह असेंबल करते हैं और उसके बाद दे सेंड इट टू सम सिटी टू सेल इट. ठीक है. सो जो ये चारों फैमिलीज है, दे कैन फॉर्म अ कोऑपरेटिव, मतलब एक सोसाइटी होती है जिसपे दे विल पूल देयर मनी एंड व्हाटएवर बेनिफिट्स दैट दे विल गेट फ्रॉम that trust, that will be distributed equally among the 4 families. ठीक है. So that is called cooperative. Cooperatives जो होते हैं ये voluntary organization, जैसे आपका अमूल सबसे फेमस है ना, that is one cooperative. So they are voluntary organization in which individuals with common needs they come together, they pool their resources. ठीक है. अब now under 97th Constitutional Amendment Act, under Article 19(1)(c), you have the fundamental right as to right to form cooperatives. ठीक है. उसके बाद 43B इसने ऐड किया है जिसपे इन्होंने स्टेट को बोला है कि स्टेट शैल एंडेवर टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स. तो it is a directive principle also now, and it is now a fundamental right also. It has also added a new chapter called chapter 9B, which deals with the incorporation terms of member etc. ठीक है. From article 343ZH to 343ZT. Now, who is called father of cooperative movement in India? So he is Sir Frederick Nicholson. ठीक है. Cooperatives किस लिस्ट पे आते हैं? Under 7th schedule, so it falls in the state list. ठीक है. और मल्टी, अगर if there is one cooperative जो कि कई सारे states में फैला हुआ है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे वीटा है, वीटा is one cooperative which is only in हरियाणा. ठीक है. तो उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है that will deal with it. But if there is a cooperative which is spread across different state, तो वहां पे एक एक्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 which provides for the registration. ठीक है. Now इशू क्या है 97th Constitutional Amendment Act से? Because it is amending some of the federal provisions of the Constitution, so it needs to be ratified by more than half of the state. ठीक है. But however, it has been passed without the ratification, so that's why जो Supreme Court है उसने कुछ parts जो है of 9B उसको इनऑपरेटिव कर दिया. ठीक है. एंड इट विल बी ऑपरेटिव ओनली इफ इट इज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव. ठीक है. बिकॉज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो है मेनली उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, सो दे विल बी ऑपरेटिव इन दैट. बट इफ इट इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दे विल बी इनऑपरेटिव. नेक्स्ट इज सिटीजनशिप. ऑलवेज इट इज इन न्यूज. सो फर्स्ट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. ये आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उस पे आप यू कैन रीड अबाउट दिस कि जो एनआरआईज होते हैं, जो
आपके ओवरसीज सिटीजन होते हैं उसमें क्या अंतर होता है. सो मेनली इट वाज इन न्यूज बिकॉज जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है दे हैव गॉट अ नोटिफिकेशन इन विच जो ओसीआई जर्नलिस्ट और रिसर्चर्स हैं they will have to notify about their activities, that what they are doing in India, the journalists and the researchers who are OCI. Okay, so it has been criticized also कि they have the freedom to operate, so the government is interfering into their work. Okay, and this will equate OCIs with foreigners because जो foreign journalists or researchers आते हैं, so they will have to tell Ministry of Home Affairs that over what subjects they are doing the work. ठीक है, तो OCIs को भी वहां लिया देता है. अब एनआरआईज एंड ओसीआईज में अंतर क्या होता है? एनआरआई सिंपल सा मतलब है कि दे आर इंडियन बट दे आर नॉट लिविंग इन इंडिया. ठीक है, सो दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया बट दे आर नॉट लिविंग इन इंडिया. दोज आर एनआरआईज. ओसीआई मींस अ पर्सन हु इज ऑफ इंडियन डिसेंट, मतलब कि उनके जो फोर फादर्स थे दे वर इंडियंस, सो दे डू नॉट हैव द इंडियन पासपोर्ट बट दे आर ऑफ इंडियन डिसेंट. ठीक है, so NRI simply means those who are with Indian passport living outside the India. OCI are the registered OCI card holder और ये किसके अंदर? Under Citizenship Act 1955. ठीक है, so they are foreigners, they are not Indians, remember this thing, and they are of Indian origin. इसके बेनिफिट क्या होते हैं ओसीआई कार्ड का? आपका मल्टी एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा होता है, मतलब whenever you will enter into a country you will have to get a visa of that country. So in this case you do not need to get a visa every time you are entering India. ठीक है, फिर exemption from FRRO मतलब फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर. एक्चुअली एफआरआरओ पुलिस स्टेशन में होता है कि इफ यू आर इनटू कंट्री देन इन सर्टेन टाइम्स अगेन एंड अगेन यू विल हैव टू गो टू पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर योरसेल्फ कि कहीं आप गुम ना हो जाओ कंट्री में या भाग ना जाओ. ठीक है, सो इन दैट फॉर दैट इट इज देयर. देन इनको पैरिटी है एनआरआईज से, मतलब दे आर इक्वल टू एनआरआईज इन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड. हाउएवर ये क्या नहीं कर सकते हैं? दे कैन नॉट बाय एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन property, remember this thing. However, they are allowed to inherit it. ठीक है, so जो OCIs हैं they can not buy agricultural or plantation property, however they can inherit that. ठीक है, इसके अलावा they are allowed for inter-country adoption, so children they can adopt, they can pursue profession like doctor, pharmacist, etc. and they have parity in airfare tariffs to NRIs. ठीक है, now they do not get voting rights obviously because they are not citizen of India and they cannot hold a government job again because they are not a citizen of India. ठीक है, now anyone who has OCI card for 5 years and has been resident मतलब होता है कि इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, for 12 months can allow for citizenship. ठीक है, however if a person who has been a citizen of Pakistan or Bangladesh, अगर ये कभी भी सिटीजन रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश के, देन दे कैन नॉट अप्लाई फॉर ओसीआई कार्ड. ठीक है, दैट इज वन थिंग. फिर सिटीजनशिप आप पढ़ लेना, ये पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 to 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इट एंड इट इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. नेक्स्ट इज फॉरेन ट्राइब्यूनल्स. ये क्यों है? बिकॉज जो आपके इलीगल माइग्रेंट्स हैं, those who have entered in India, so they are always in news. So foreign tribunals क्या होते हैं? They are quasi judicial bodies and they have formed under Foreigners Tribunal Order 1964. इस पे अभी recently ये news में इसलिए था because जो Ministry of Home Affairs है, they have amended it to empower district magistrates in states and union territories to set up tribunals to decide whether a person is staying illegally or not. ठीक है, so अभी तक जो आपके DMs होते थे, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर जिनको बोलते हैं, so they did not have power. Now they have the power to set up a foreign tribunal. और foreign tribunal करता क्या है? It decides whether a person is a foreigner or it is an Indian. ठीक है, so now the power has been decentralized to them. Now impeachment of president, ये क्यों था? Because जो former US president थे डोनाल्ड ट्रम्प, so he became the first US president to be impeached twice. ठीक है, इंडिया में क्या है impeachment का प्रोसेस? आर्टिकल 61 डिसाइड करता है and only on one condition. Remember कि president can be impeached only on one condition, that is on the violation of constitution. ठीक है, अब इनका जो impeachment है, it can be initiated in either house, तो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, in either house it can be initiated. जब आप इनिशिएट करोगे तो इट शुड, द चार्जेस शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड देन 14 डे का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को. देन जो फर्स्ट हाउस है जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है, इट शुड बी पास बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, है ना, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, नीदर सिंपल नॉट स्पेशल, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. देन जो सेकंड हाउस है, इट विल इन्वेस्टिगेट इट एंड इट विल पास विद द सेम मेजॉरिटी. ठीक है, उसके बाद जो आपके प्रेसिडेंट है वो इम्पीच हो जाएंगे.
नेक्स्ट इज पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। ये भी अगेन इट वाज इन न्यूज कि इसको आप पढ़ लेना कि जो प्रेसिडेंट है दे कैन आपका जो है कोर्ट मार्शल मतलब जो आपके मिलिट्री कोर्ट्स है उनको दे कैन हियर, बट जो गवर्नर है दे कैन नॉट। और जो प्रेसिडेंट है दे हैव द पावर टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस। पार्डन मतलब कंप्लीटली माफ कर देना, ठीक है। हाउएवर जो गवर्नर है दे कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, बट रिमेंबर बट अ गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। तो इवन दो दे कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, दे कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट इट, ठीक है। नेक्स्ट 9th शेड्यूल, ये क्यों न्यूज में है? बिकॉज अभी कई सारे स्टेट्स जो थे दे डिमांडेड जो रिजर्वेशन है दे शुड बी पुट अंडर लॉ इन 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल लाया कब क्या था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे लाया गया था एक्चुअली when Nehru government started doing land reforms, है ना? So a lot of people, a lot of zamindars, because at that time right to property was a fundamental right. It was removed by by constitutional amendment 44, ठीक है? So a lot of people started going to Supreme Court saying that our right to property is being violated because of land reforms. So Nehru government, they bought the first constitutional amendment act. In that they added 9th schedule. So in 9th schedule, they said that whichever law which will be put in this will not be challenged by court. So the laws which were kept in 9th schedule were kept beyond the scope of judicial review. ठीक है? This has been asked in UPSC prelims a number of times. So remember this thing कि जितने भी सेंट्रल और स्टेट लॉज जो हैं they cannot be judicially reviewed. However, in IR कोहिलो केस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 9th शेड्यूल के जो लॉज थे दे वर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटिनी आफ्टर केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। सो आफ्टर 24 अप्रैल 1973 जजमेंट, उसके बाद जितने भी लॉज प्लेस किए गए हैं, व्हाटएवर लॉज दैट हैज बीन प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल, दे आर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटिनी because the thing is that Supreme Court can check that whether they are violating the basic structure or not, ठीक है। So उस पे जो laws हैं they have to dual test होगा जिसपे उनको खड़ा उतरना पड़ेगा, ठीक है। The first is whether they violate any fundamental rights. If yes, if they are violating any fundamental rights, then whether its violation affects the basic structure, ठीक है। तो अगर दोनों का आंसर yes है, मतलब कि एक जो law है it is violating the fundamental right and the violation of fundamental right is violating the basic structure, in that case the law can be declared unconstitutional. So it simply means कि जो power of judicial review है it now extends to your 9th schedule also, ठीक है। नेक्स्ट इज यूएन इज नॉट अ स्टेट। जो आपका आर्टिकल 12 है ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट व्हिच इंक्लूड्स योर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज एंड पीएसयूज। तो उस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस है इट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट इज नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्टिकल 226। 226 क्या है? जो रिट्स होती हैं बाय हाई कोर्ट्स, है ना। सो इट इज नॉट अंडर डेफिनेशन, तो आप रिट्स नहीं इशू कर सकते हो किसको? यूनाइटेड नेशंस को, ठीक है। फिर इस पे मैंने ये दिया हुआ है कि कौन कौन आते हैं अंदर आर्टिकल 12। नेक्स्ट इज आधार। आधार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका 2021 में भी पूछा था, 2020 में भी पूछा था, इन 2018 में भी पूछा था। सो ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन इन आधार। सो आधार क्यों है था? क्योंकि आधार में एक अमेंडमेंट लाया गया था 2018 में, आधार लॉ लाया गया था 2016 में एंड अमेंडमेंट वाज बॉट इन 2018। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इट हेल्ड द वैलिडिटी ऑफ आधार विद सर्टेन रूल्स, ठीक है। सो फर्स्ट अ लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन आधार है ये क्या है? ये 12 डिजिट बायोमेट्रिक बेस्ड इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना। मतलब एवरी इंडिविजुअल विल हैव डिफरेंट नंबर एंड इट इज मैनेज्ड बाय UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया and Ministry of Communication and Information Technology, ठीक है। So any resident, now remember this thing, resident मतलब होता है citizen plus foreigners living in India. So anyone who is a resident of India, who is living in India, doesn't matter where citizen or foreigner, they can get an Aadhaar, but it is not a proof of citizenship, ठीक है। So because anyone can get it, so it is not a proof of citizenship. So what it is proof of? It is proof of your identity, it is proof of your residence, and now जो आपका financial address है वो भी इससे एडेड है। मतलब जो आपका पैन नंबर है और जो आपका ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न्स है, दे आर आल्सो नाउ लिंक्ड विद योर आधार एंड इट इज मैंडेटरी नाउ, ठीक है। तो जो डेटा है आधार का वो कहाँ स्टोर किया जाता है? इट इज स्टोर्ड इन सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी, ठीक है।
इसके एक्सपेंडिचर जो खर्चे होते हैं आधार के वो कहाँ से निकाले जाते हैं, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते हैं, ठीक है। नाउ वेयर इट इज रिक्वायर्ड, मतलब वेयर आधार इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी फॉर योर वेलफेयर स्कीम्स, अगर आप पीडीएस एलपीजी ये सब यूज कर रहे हो, इट इज मैंडेटरी फॉर योर इनकम टैक्स रिटर्न्स, एंड इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू लिंक योर आधार विथ योर पैन कार्ड, ठीक है, मतलब जो आपका इनकम टैक्स है वो। एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड, कहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है, if you want to, you do not need to link it with your bank account for SIM card for private companies, for school admission, for NEET, UGC, CBSE exams ये सब देने आते हो, so it is not required that you have to carry your Aadhaar card, ठीक है। Now जो 2018 का वर्डिक्ट था, because at that time law पास किया गया था, amendment पास किए गए थे on Aadhaar, so there was a verdict on Aadhaar verdict. So Aadhaar passed the triple test laid down in पुट्टास्वामी। पुट्टास्वामी में जो जजमेंट था और प्राइवेसी जजमेंट, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 टेस्ट पास किए थे कि एनी लॉ if it is passing the 3 tests then it is not violating your right to privacy, ठीक है। क्या क्या, पहला तो एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, कि मतलब कोई भी जो बॉडी इट शुड बी बैक्ड, so जो आधार है, it is backed by Aadhar Act 2016. Second, there should be a legitimate state interest, है ना, so जो social welfare schemes है वो they are linked with Aadhar, so obviously there is a legitimate state interest. And third is the test of proportionality, तो जो आपके benefits है it balances the threats, तो आपके आधार से जो भी threats है it balances out with all the benefits that you get from Aadhar, ठीक है। So Supreme Court judgment ने it made it mandatory for PAN and ITR, जो इन्होंने था, उन्होंने स्टोरेज पीरियड ऑफ डेटा, जो आधार का डेटा है वो पहले आप कब तक स्टोर कर सकते थे, फॉर 5 इयर्स, जो ये जजमेंट है इसने इसको रिड्यूस कर दिया फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। देन इट कैन नॉट बी मेड कंपलसरी फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट और गेटिंग मोबाइल कनेक्शंस, ठीक है। ऑल दिस हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी। Now, no company or private entity can ask Aadhaar identification, मतलब they cannot compel you to give your Aadhaar identity. ये स्टक डाउन एक प्रोविजन जो था कि जिसपे इट अलाउड शेयरिंग ऑफ डेटा फॉर नेशनल इंटरेस्ट, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया है, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधार जो है इट इज वैलिड बिकॉज देयर इज नो फियर ऑफ सर्विलेंस स्टेट्स, इट कलेक्ट्स मिनिमम पर्सनल डेटा like iris scan, fingerprints, and only registered device can conduct biometric based authentication, मतलब it simply meant कि जो minimum data है आपका वो collect किया जा रहा है, so it is not a big threat for your privacy, ठीक है। So again it has said it is not mandatory to link bank accounts with Aadhaar. Then some new amendment has been brought in 2019, so Aadhaar and Other Laws Amendment Act 2019. So what is it? So first is it allows online offline verification of an individual's identity without authentication through modes specified by UIDAI, मतलब जो आपका offline verification है उसको allow करता है, ये पहली चीज ये है, ठीक है। दूसरी चीज है person can voluntarily use Aadhaar for its for establishing their identity, and they can be made mandatory only with law made by Parliament, ठीक है। तो जो आपका आधार है वो वॉलंटरी यूज पे किया जा सकता है फॉर एस्टैब्लिशिंग योर आइडेंटिटी, हाउएवर इट कैन बी मेड मैंडेटरी ओनली बाय द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। उसके बाद इट अमेंड्स टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, टू इनेबल टू स्टेट दैट पर्सन्स विथ a license to maintain telegraph, banking company, etc. may verify identity of clients by authentication or offline verification of Aadhaar. मतलब those people who are working in banking companies और telegraph जो है वो use कर सकते हैं आधार को for offline और online verification, ठीक है। But client has choice, but no one can be denied service for not having an Aadhaar number, ठीक है। So जो telegraphs और banking companies they can collect the Aadhaar information, however they cannot compel anyone to give the Aadhaar इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ जो चिल्ड्रन है उनके बारे में क्या, क्या बच्चों का आधार कार्ड हो सकता है? यस, विथ द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियन अ चाइल्ड कैन हैव आधार नंबर, एंड जब वो 18 साल के ऊपर के हो जाएंगे, मतलब जब वो एडल्ट हो जाएंगे, दे कैन अप्लाई फॉर द कैंसिलेशन ऑफ इट, ठीक है। सो दैट इज मेन थिंग। नाउ डिस्क्लोजर, अगर आधार का डिस्क्लोजर करना होगा इन्फॉर्मेशन का, सो इट कैन ओनली बी डन बाय द ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट, और जो अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए करना है डिस्क्लोजर, देन इट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी लेवल का जो ऑफिसर होगा, होम सेक्रेटरी लेवल का, एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, उनके बिलो के रैंक के ऑफिसर कैन नॉट डू दैट, ठीक है। देन इट ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल्स टू रजिस्टर कंप्लेंट्स इन केस ऑफ डिस्क्लोजर, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी गई है, देन यू हैव द ग्रीवियंस रिड्रेस बाय क्या कहते हैं अथॉरिटी, और जो इसका अपीलिएट अथॉरिटी, मतलब कि आफ्टर इमीडिएट अथॉरिटी जिसपे आपने कंप्लेन किया, अगर आपको उसके इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट जजमेंट, तो जो सेकंड अथॉरिटी जिसपे आप जा सकते हो, दैट इज टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलिएट अथॉरिटी, ओके।
Then there are few miscellaneous topic of constitution. So first is Supreme Court has held that right to government aid. So government can provide aid to minority institutions under Article 32. So it is under Article 30 sub clause 2. So it is not a fundamental right. ठीक है, Supreme Court ने ये चीज clear कर दी है. सेकेंड थिंग इज जो हेट स्पीच होती है, तो देर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच, बट इसको आप कन्फाइन कर सकते हो. मतलब योर स्पीच कैन बी कन्फाइंड बाय आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज 2 which provides for reasonable restrictions in fundamental speech. Then Article 124A and Article 153A and B. 124A is sedition, 153A and B is मतलब जो religious sentiments को hurt करने वाली चीज है. ठीक है. Then right to protest. So remember one thing कि जो Article 19 it allows for peaceful assembly, but it has been made clear that it is not an absolute right. So you have right to peacefully assemble, but you do not have the right to strike. And even right to protest is not absolute. मतलब it should not hinder traffic, it should not hinder public movement. ठीक है. Next is right to forgotten. So that comes under your right to privacy also. So इस पे ये right to forgotten का मतलब क्या होता है कि जो आपकी personal information है in internet search engines it can be removed. ठीक है. So it comes under the ambit of right to privacy. Next is gambling and betting. ठीक है. So ये क्यों है? Because जो law commission है इसने बोला है कि it is impossible to stop gambling, illegal gambling, so it is better to regulate it. ठीक है. तो पहली चीज होती है लॉटरी. लॉटरी जो होती है यूनियन लिस्ट पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेगुलेट इट विथ बोथ सेंटर एंड स्टेट. सो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स है, जैसे पंजाब है या और भी कई सारे, कर्नाटका था बट नाउ इट इज नॉट डूइंग. सो लॉटरी में क्या होता है कि आप पर्ची लेते हो, यू विल बाय वन टिकट, एंड अगर वही नंबर लॉटरी में फंस जाता है देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है. सो इट इज कंट्रोल्ड बाय यूनियन, इट इज इन यूनियन लिस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इसको सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी. दूसरा होता है गैम्बलिंग. गैम्बलिंग जो होता है इट इज इन स्टेट लिस्ट. ठीक है. लॉटरी इज इन सेंट्रल लिस्ट, गैम्बलिंग इज इन स्टेट लिस्ट, और स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए कानून बना सकती है. ठीक है. बट देयर इज अ वन ओल्ड ब्रिटिश एरा कानून लॉ विच इज स्टिल वर्किंग, जिसको बोलते हैं पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट. सो गैम्बलिंग होता क्या है? ठीक है. एक्सेप्ट फॉर लॉटरी ऑल टाइप ऑफ गैम्बलिंग इज बैंड. सो ऐसा कोई भी गेम होता है विच इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल. ठीक है. मतलब इट इज अ गेम ऑफ चांस. अगर स्किल इन्वॉल्व है तो इट इज नॉट गैम्बलिंग. गैम्बलिंग का मतलब होता है तुक्का लगना. इट इज अ गेम ऑफ चांस. सो एनी काइंड ऑफ गेम विच इज गेम ऑफ चांस, सो इट इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया. ठीक है. गैम्बलिंग. फिर जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स योर ऑनलाइन गैम्बलिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टेट फ्लैग इशू. स्टेट फ्लैग इशू क्यों था? क्योंकि जो कर्नाटका था, दे डिमांडेड कि देयर स्टेट फ्लैग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन at the national level. ठीक है. So अभी at present, because we have a single constitution, we have a single rights, single citizenship, so there is no official state flag. Okay, there is only national flag. Earlier जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल स्टेट फ्लैग था, बट राइट नाउ ऑल द स्टेट फ्लैग्स आर अनऑफिशियल. ठीक है. सो एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट हैड मेड इट क्लियर दैट जो फेडरलिज्म इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो स्टेट फ्लैग इलीगल नहीं है. यू कैन होस्ट स्टेट फ्लैग, although it is not officially recognized. You can host it, but it should be hosted in such a manner that it should not dishonor your national flag. Okay, so states can have state flag, but it should not dishonor your national flag. Okay, we will take 30 seconds break and then we will start the next topic, legislature at work.
one thing more, next week जो आपका session होगा thematic session, it will be on science and technology, and comprehensively I will cover every aspect of science and technology, whether it is your space, even though I have taken one class, but that was for the basics of science and technology. So now I will cover comprehensively everything that has been in news for science and technology in past 5 years, है ना? So biotechnology, space, energy, nanotechnology, your research and development. So everything will be covered in that thing. So if you were not scoring a lot in your previous attempts in science and tech, believe me, this year when you will go for exam, if you seriously follow the science and tech classes, then you will see the wonders. That how when you are comprehensively covered science and technology, it will definitely boost your 4 to 6 marks in science and technology. Okay, chalo. Next is legislature and work. So this is a quite static, है ना? इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा current affairs related नहीं था, but just we will revise some static portion because of it. ठीक है? So first is parliament. तो parliament के जो sessions होते हैं, constitution में केवल इतना बोला गया है कि जो one session should not be after, मतलब जो 2 sessions हैं उनके बीच में gap should not be more than 6 months. So that means कि at least there should be 2 sessions in 1 year. That is what has been said in constitution. So there is no fixed parliamentary calendar, but by convention there are 3 sessions. ठीक है? पहला होता है budget session, which is the longest. Second is monsoon session, and third is winter session, which is the shortest. ठीक है? So who summons the parliament? So जो president है under Article 85, he summons the parliament. ठीक है? Next is deputy speaker. So ये article 93 के तहत है, and there is no timeline for election. So जो president होता है, he decides the election date for speaker, और जो speaker होता है वो decide करते हैं election date for deputy speaker. ठीक है? So they जो deputy speaker होते हैं, they are the chairman of the budget committee, जो कि budget proposals को approve करती है. Next is public account committee. Public account committee बहुत ज्यादा news पे रहती है, और अभी जो इसका मतलब जो it completed its 100 years in 2021. ठीक है? So it is the oldest parliamentary standing committee. See, it is a current affair of 2021, so there is a high chance that they may ask it this year. ठीक है? So it is the oldest parliamentary standing committee on finance. 1921 में बनी थी. It has 22 members. ठीक है? 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. Who appoints the chairman? Speaker. ठीक है? And by 1967 there is a convention की जो chairman होता है, they are usually taken from opposition. ये करते क्या है? जो भी sums granted किए गए थे, मतलब whatever money that was given to government of India, so they see that it has been spent, the government has spent it in right way, and जो annual finance account होते हैं government of India के, उनको भी review करते हैं. Then it also examines the report of comptroller and auditor general. So जो PAC होता है और CAG होता है, they work very closely. Next is office of profit. It has not been defined in Constitution of India or in Representation of People's Act 1951. तो ना संविधान में defined है ये, ना RP Act 1951 में defined है. But there are certain court judgments जिसके तहत जो इनकी definition है वो बनाई गई है. ठीक है? So court judgment क्या बोलते हैं कि it makes a position कि जो certain duties है which are of public character, मतलब जो public से deal करती हैं, which are not in private in nature. So those comes under office of profit. So Supreme Court ने प्रद्युत बोरदोलोई केस in 2001, प्रद्युत बोरदोलोई केस, इस पर उन्होंने 4 criteria बताए थे कि whether an office is office of profit or not. So first was whether government exercises control on appointment or removal. ठीक है? क्या सरकार appoint या remove करती है? Second, whether remuneration is attached, क्या उनको पैसे वगैरह मिलते हैं काम के? Whether body has government powers. ठीक है? सरकारी power है in that body or not? And finally, whether office enables hold to influence by the way of patronage. मतलब कि there is a power, there is a element of power that they can influence other people. ठीक है? तो अगर ये 4 criteria कोई office meet करता है ना, so in that case it is office of profit. Now under article 102 sub clause 1 and article 191 sub clause 1 जो आपके MPs हैं और जो MLAs हैं, member of parliament और जो आपके विधायक होते हैं ना, they are barred from holding office of profit. ठीक है? And it is also a ground of disqualification under Representation of People's Act 1951. ठीक है? So if they are holding office of profit, they will be disqualified. Then Parliament का एक law है, Parliament Prevention of Disqualification Act 1959. इस पे बहुत सारे ऐसे officers बताए गए हैं which are exempted from disqualification. So if you are holding that office,
So you will not be removed from the post of MP or MLA just because you are holding those offices. Next is Rajya Sabha election. Why it was in news? क्योंकि continuous house है. अभी recently a number of members of Rajya Sabha they retired, है ना? So ये क्या होते हैं? They are elected by members of state legislative assembly by what method? Proportional representation with single transferable vote. ठीक है? और कौन decide करता है इनके number? So fourth schedule जो है it allocates seats to different states and the basis of allocation of seat is population. जिस state पे ज़्यादा population होगी वहाँ से ज़्यादा members आएंगे. Suspension of MPs because a lot of MPs were जो थे they were not allowing parliament to function, so a number of MPs were suspended. तो कैसे suspend किया जाता है MPs को? तो rule 256 जो है आपका conduct of business in राज्यसभा या लोकसभा it allows it. ठीक है? So ये अभी तक कितनी बार यूज किया गया? Around 13 times in past. एंड कब किया जाता है? इफ मेंबर डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी ऑफ चेयर और अब्यूजेस रूल्स. ठीक है? तो चेयर में बैठे हुए हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और एनी पर्सन हु इज सिटिंग इन चेयर, तो अगर उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं और इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द हाउसेस, सो इन दैट केस द मेंबर कैन बी सस्पेंडेड अंडर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स. नाउ रिपीलिंग अ लॉ. क्यों? बिकॉज जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रिसेंटली फार्म लॉज जो है उनको वापस ले लिया था. ठीक है? सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिपीलिंग अ लॉ? ठीक है? पास करने का तो हमको पता है कि इन व्हाट वे जो ऑर्डिनरी लॉज या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स या मनी बिल्स इनको पास किया जाता है, इनको रिपेल कैसे किया जाता है? तो अंडर आर्टिकल 245 मैकेनिज्म दिया गया है रिपेल का. इट गिव्स पार्लियामेंट टू पावर टू अमेंड और रिपेल अ लॉ. ठीक है? इसका भी प्रोसीजर सेम वैसा ही होता है जैसा आप जब लॉ पास करते हो. द सेम वे कि द बोथ हाउसेस इट विल हैव टू बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है? बिकॉज इट इज एन ऑर्डिनरी लॉ. So last time ये पहली बार यूज किया है. No, in 2019 also it was used when government जो है it repealed 58 obsolete laws. ठीक है? So it is not that first time it has been repealed. Now there are certain laws which have a sunset clause. ठीक है? sunset clause का मतलब क्या होता है कि कुछ laws जो होते हैं वो केवल एक particular date तक काम करते हैं. After that they automatically cease to exist. तो एक लॉ अगर आपको बोल दिया जाएगा कि ये 1 जून 2023 तक काम करेगा, सो ऑन 1 जून 2023 दैट लॉ विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर, है ना? और जो ये क्लॉज ये चीज बोल रही है दैट विल बी कॉल्ड सनसेट क्लॉज. नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. ठीक है? ये क्यों किया गया था? क्योंकि जो रफेल इशू था, तो रफेल जो आपके फाइटर जेट्स है फ्रॉम फ्रांस, तो उस पर प्रिविलेज मोशन लाया गया था अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर. ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिविलेजेस क्या होते हैं? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. तो ये आपके आर्टिकल 105 फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 194 ये दोनों सर्टेन प्रिविलेजेस देते हैं टू योर एमपीज एंड एमएलएज बिकॉज टू प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच, ताकि वो डरे नहीं इन द हाउसेस टू स्पीक देयर माइंड. ठीक है? सो इज देयर अ लॉ? No, there is no law which codifies the privileges. ठीक है? तो कोई कानून नहीं है कि जो कोडिफाई करता है प्रिविलेज. सो तो हम कैसे डिसाइड करते हैं प्रिविलेजेस को? ये 5 सोर्सेस पे है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वेरियस लॉज ऑफ पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस. इन 5 चीजों के बेसिस पे ये डिसाइड होता है. तो जो प्रिविलेजेस है आपके वो कलेक्टिव भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं. कलेक्टिव मतलब जो सब एमपीज एमएलएस को मिलते हैं, और इंडिविजुअल मतलब जो इंडिविजुअल एमपीज एमएलएस को मिलते हैं. ठीक है? सो कलेक्टिव प्रिविलेज क्या है? इट कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम अ सीक्रेट मीटिंग, अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हो रही है. ठीक है? देन फ्रीडम ऑफ press to publish true report of parliamentary proceeding. ठीक है? but not of secret sittings. तो अगर कोई जर्नलिस्ट है वो केवल if they are just telling that what happened in parliament, है ना, they are just discussing what happened in parliament, so they cannot be put into jail because why you are telling what happened in parliament to the public. ठीक है? then only parliament can make rules for its own proceedings. कोई और कानून उनके proceedings के rules नहीं बना सकता है. and finally there is a bar on court from inquiring into the procedure of house. तो जो courts है आपके, चाहे सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, they cannot inquire what happened in house and why it happened. ठीक है? because to maintain the separation of power. अब individual privileges क्या क्या है? So जो MPs MLAs है, they cannot be arrested during the session and 40 days after and before the session. ठीक है? तो जो आपका सेशन चल रहा है तब, और 40 दिन उसके पहले और 40 दिन उसके बाद they cannot be arrested. So almost like whole of year. ठीक है? So but they cannot be arrested only for civil cases. ठीक है? अगर criminal case उन्होंने कुछ किया है तो in that case they can be arrested. Then they are not liable to in court for any speech in parliament. अगर वो parliament या
लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ भी बोलते हैं, सो आप सेडिशन या क्या कहते हैं आर्टिकल ये सेक्शन 153 ये सब लगा के उनको कोर्ट नहीं ले जा सकते। दे हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिमेंबर दिस थिंग, दे हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउसेस, ठीक है, सब्जेक्ट टू कि जो यू आर नॉट वायलेटिंग द रूल्स ऑफ द हाउस, ठीक है, एंड दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विस। सो जो जूरी सर्विस होती है कि मतलब अगर कहीं गवाही वगैरह देना है इन कोर्ट, सो इफ दे आर द हाउस इज इन सेशन, सो दे कैन से दैट हाउस इज इन सेशन, वी कैन नॉट कम टू डू जूरी सर्विस, ठीक है। अब प्रिविलेज मोशन क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया गया था, ये एक मेंबर लाता है हाउस का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाता है इन इन व्हेन दे फील कि जो मिनिस्टर है उन्होंने या तो दे हैव कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, जो कलेक्टिव प्रिविलेज है हाउस का, ये जो हाउस का प्रिविलेज उसको ब्रीच किया है, ईदर बाय विथहोल्डिंग द फैक्ट्स, दे हैव नॉट टोल्ड एवरीथिंग टू द हाउस, और बाय गिविंग द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर ये दो चीजों पे अगर केस है तो इन दैट केस क्या सकता है, जो आपका प्रिविलेज मोशन है, इट कैन बी बॉट। नेक्स्ट इज कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, जो ये है पूरी एक कमिटी देखती है कि जो आपके प्रिविलेजेस है हाउ दे आर मेंटेन्ड। सो बोथ हाउसेस की अपनी अगली क्या कहते हैं अपनी अलग अलग कमिटीज हैं, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। सो इन लोकसभा देयर आर 15 मेंबर्स एंड इन राज्यसभा देयर आर 10 मेंबर्स। और ये क्या करती क्या है, जो केसेस होते हैं ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस उनको इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों, क्योंकि अगेन इन जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन था, सो अपोजिशन अगेन वाज नॉट एबल टू गेट इवन 10% ऑफ द स्ट्रेंथ, ठीक है। सो लीडर ऑफ अपोजिशन होता क्या है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, मतलब बाय लॉ इट हैज बीन फॉर्म्ड एंड इट ड्रॉज इट्स पावर, सैलरी, अलाउंसेस फ्रॉम दिस थिंग लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट 1977, ठीक है। अब होता कौन है, इट इज डिफाइंड एज द लीडर इन दैट हाउस और पार्टी इन अपोजिशन which is the party in opposition which is having the greatest numerical strength, ठीक है। तो जो opposition में सबसे greatest numerical strength है, they are considered as लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो इस पे डिसाइड किया गया था बाय डायरेक्शंस बाय स्पीकर इन 1956 कि गवर्नमेंट या स्पीकर जो है he decides who will be the leader of opposition. He is not obliged to recognize a member as largest opposition if they get 1/10, if they fail to get 1/10 of the quorum. तो अगर 1/10 of 545 seats, if you have not been able to get that, then speaker is not compelled to declare you as leader of opposition, ठीक है। जो leader of opposition होते हैं, इनकी जो रैंक होती है, it is of cabinet minister, so it is very high ranking person, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइवेट मेंबर बिल्स। प्राइवेट मेंबर होते कौन है, एनी एमपी या एमएलए, कोई भी एमपी या एमएलए है, वेदर इट इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी और वेदर इट आर फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है। चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी से हो, इफ दे आर नॉट मिनिस्टर देन दे आर प्राइवेट मेंबर, सिंपल, ठीक है। ये क्यों होता है, बिकॉज जो प्राइवेट मेंबर्स हैं दे कीप ऑन ब्रिंगिंग न्यू अमेंडमेंट या ये कंट्रोवर्शियल लॉज वगैरह लाते रहते हैं, ठीक है। एनी एमपी इज नॉट अ मिनिस्टर इज अ प्राइवेट मेंबर, सो ये लॉ ला सकते हैं। दे कैन आल्सो ब्रिंग बिल, but they can bring bill only with 1 month's notice. First of all, they will have to give 1 month notice if they want to bring a bill, and then they can only their bill can only be introduced and discussed on Fridays, ठीक है। तो फ्राइडे पे को मतलब जो ऑलमोस्ट वीकेंड से उनके बिल डिस्कस किए जाते हैं। आज तक क्या प्राइवेट मेंबर का कोई बिल जो है वो पास हुआ है? यस, लास्ट टाइम जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो 1970 में पास हुआ था, ठीक है। द बिल वाज सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एफिलिएट ज्यूरिसडिक्शन बिल 1968, ठीक है। दे कैन आल्सो ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो आपके ऑर्डिनरी लॉज भी ला सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स भी ला सकते हैं, बट मनी बिल्स नहीं ला सकते हैं, ठीक है। और दे हैव वेरी लेस चांस की जो देयर बिल बी पास्ड, ठीक है। अब लैप्सिंग ऑफ बिल, ये अगेन ये एक स्टैटिक है, ठीक है। इसको आप एक बार देख लेना कि इन विच कंडीशंस जो है वो, इसका कंटेक्स्ट इसलिए था क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट था उन्होंने कहा था कि जो प्रोविजंस है व्हिच लीड्स टू लैप्सिंग ऑफ बिल इन लोकसभा, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि कोई भी बिल अगर लैप्स हो गया तो अगेन इट हैज टू बी बॉट इन वन हाउस देन पास देन नेक्स्ट हाउस, ठीक है। सो अंडर आर्टिकल 107 जो बिल्स है वो कुछ कंडीशंस पे लैप्स हो जाते हैं, ठीक है। दिस यू हैव रेड इन लक्ष्मीकांत, यू कैन रिवाइज इट हियर। नेक्स्ट इज कैबिनेट कमिटीज। कैबिनेट कमिटीज क्यों थी न्यूज पे, क्योंकि ऑलवेज इनकी मीटिंग वगैरह चलती रहती है और अभी 2 नई कैबिनेट कमिटीज बनाई गई थी, ठीक है। फर्स्ट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड सेकंड इज कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। बोथ आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और ये 2019 में बनाई गई। कैबिनेट कमिटीज, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दे आर under which
under what they are formed? So they are formed under Government of India Transaction of Business Rules 1961. कौन बनाता है? प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू नीड. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर दो टाइप की कमिटीज होती है, स्टैंडिंग विच आर परमानेंट एंड एड हॉक विच आर टेम्पोररी. ठीक है, सो दे अलाउ फॉर कोऑर्डिनेशन एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी. इनके मेंबर कौन हो सकते हैं? ओनली कैबिनेट मिनिस्टर कैन बी मेंबर. हाउएवर जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर है दे आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम दिस. ठीक है, so जो मेजॉरिटी ऑफ cabinet committees है, they are headed by prime minister, but there are few which are not headed by him. ठीक है, इसकी लिस्ट आप लक्ष्मीकांत पे देख सकते हो. So, but these were the two committees which were in news. Next is no confidence motion. पासी no confidence motion news में रहता ही है because one state government or another जो opposition है वो इसको लाता है. So article 75 जो है वो बोलता है कि जो council of minister है it will be collectively responsible to लोक सभा. ठीक है, that means कि जो आपका लोक सभा है it can remove the ministry from office. तो रूल 198 जो है आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इट कैन ओनली बी बॉट इन लोकसभा. ठीक है, तो ये जो रूल्स है ये बताते हैं. सो नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बट दीज रूल्स दे से कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इट कैन बी मूव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ हाउस, बट इट शुड हैव the motion should be accepted by at least 50 members and then speaker will decide the date of discussion of motion. ठीक है, उसको डिस्कशन करने के बाद जो अगर वो if someone is bringing no confidence motion they need not to tell the reason that why they are bringing this thing. ठीक है, और अगर ये पास हो जाता है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा. ठीक है, अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ लाया गया है पाकिस्तान में. Next is issue of delimitation. It is important. It is because right now it is very much important and it is in news because there is an increase in number of, ऐसा बोला जा रहा है कि जो आपका 2026 है उस पे जो आपके both houses है लोकसभा और राज्यसभा उनकी जो total strength है 250 and 545, 552 is total but active जो है 545 है, it will be increased. ठीक है, वो क्यों था? क्योंकि जो 42nd amendment act था bought by इंदिरा गांधी, so it froze it to a certain number. So now it will be broken. मतलब जो सीलिंग है उसको तोड़ दिया जाएगा. तो पहली चीज तो डिलिमिटेशन क्या होता है? जो आपके टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं उनकी बाउंड्री बनाने को डिलिमिटेशन बोलते हैं. ठीक है, इंडिया में जो होता है सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी होती है विच आर चूजन बाय फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. ठीक है, under 31st amendment it does not apply to state and union territories with less than 6 million people. तो आज तक कितने delimitation commissions बैठे हैं? 4, 52 में, 1962 में, 1972 में एंड 2002 में. ठीक है, इशू क्या था कि जो 42nd amendment act 1976 it froze allocation of seats to lok sabha from all states till 2000. ठीक है, at 1971 level and then it was further extended by 84th constitutional amendment act to 2026. so simple सा इसका मीनिंग ये है कि जैसे कि जो आपका मान लो मध्य प्रदेश है, ठीक है, वहां से सपोज 29 MPs इलेक्ट होते हैं. ठीक है, सो इट फ्रोज की टिल 2026 आप जो है इट कैन नॉट बिकम 31 और 32, इट विल बी 29 MPs ओनली. ठीक है, ये क्यों लाया गया था? बिकॉज देयर आर सर्टेन स्टेट्स व्हिच आर डूइंग वेरी गुड इन पॉपुलेशन कंट्रोल, जैसे आपके सदर्न स्टेट्स है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, एंड देयर आर सर्टेन स्टेट्स व्हिच आर डूइंग नॉट सो वेल इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट, जैसे यूपी, बिहार हो गया है ना. सो बिकॉज सीट्स जो है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज जो है they are decided on the basis of population. ठीक है, so those states which has less population will suffer, है ना, because उनकी population कम हो गई है तो उनका representation कम हो जाएगा state पे. और those states which have higher population obviously they will get more share in the parliament. ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ये चीज लाई गई थी. तो 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया गया था. अब तो 2026 में बिकॉज आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, सो इन दैट केस देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी चेंज्ड. ठीक है, और दैट इज द मेन रीजन विदाउट दिस थिंग. फिर इसके बाद जो 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने ये बोला हुआ है कि जो आपका इंटरनल डिलिमिटेशन है, मतलब कि विद इन स्टेट जो आपकी बाउंड्रीज है उसको अल्टर किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली इट शुड नॉट चेंज द नंबर ऑफ सीट्स. ठीक है, तो आपका विद इन स्टेट नाउ इट इज अलाउड टू अल्टर द बाउंड्रीज. अब ये करता कौन है? ये करता है डिलिमिटेशन कमीशन. ठीक है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. जो भी वर्डिक्ट ये देता है या जो भी अवार्ड ये देता है इट इज अ फोर्स ऑफ लॉ एंड इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट. ठीक है, इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ऑफ हाई कोर्ट, दे कैन बी मेंबर ऑफ दिट.
इसको बनाता कौन है बॉडी को? प्रेसिडेंट बनाता है. He notifies the date on which that body will form and its copies are presented to house. But जो इनका रिकमेंडेशन है, no modification can be presented to permissible in any house. ठीक है, तो जिसका जजमेंट होता है it is final and it cannot be questioned in either parliament or in court. ठीक है. नेक्स्ट इज न्यूट्रलिटी ऑफ स्पीकर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, देयर इज अ क्वेश्चन दैट वेदर जो स्पीकर है दे आर न्यूट्रल और नॉट. ठीक है, सो हाउ द न्यूट्रलिटी ऑफ स्पीकर इज एंश्योर्ड? फर्स्ट, जो इनके सैलरीज और अलाउंसेस है दे आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. चार्ज मतलब क्या होता है? इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड बट इट कैन नॉट बी वोटेड अपॉन. ठीक है. इसके बाद इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, मतलब ही रिमेन्स इन हाउस इवन इफ हाउस इज डिसॉल्व. ठीक है. इसके बाद ही कैन ओनली बी रिमूव्ड विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब 50% प्लस वन ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस. देन हिज कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड एक्सेप्ट फॉर अ मोशन. सो यू कैन नॉट डिस्कस वेदर ही हैज बीन पार्शियल और नॉट एक्सेप्ट फॉर अ मोशन. ठीक है. और जो रूल्स, जो आपके रेसिडुअल पावर्स होते हैं, ये भी स्पीकर के पास होते हैं. एक और जो बेनिफिट है कि इफ स्पीकर resigns from a party, then he will not be brought under the anti-defection law. So there are certain provisions in constitution and laws which allows for the neutrality of the speaker. Next होता है whip. whip जो होता है ये टाइम एंड अगेन इन्वोक किया जाता है. तो whip तो आपको you must have read it in लक्ष्मीकांत. So ये क्या होता है? हर पॉलिटिकल पार्टी के whip होते हैं which are the assistant floor leader. जिनका काम क्या होता है? मैक्सिमम अटेंडेंस पार्टी की होनी चाहिए एंड दे रेगुलेट द मॉनिटर एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स. ठीक है. एंड इट इन जनरल जो मेंबर्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द विप एक्शन. ठीक है. अगर नहीं करोगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ कैन बी इन्वोक्ड अगेंस्ट यू. ठीक है. रिमेंबर वन थिंग, दिस इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि अगर कोई बिल वगैरह आ रहा है तो उस पे विप्स जो है वो इशू कर सकते हैं. देयर विप 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग. एंड उस हिसाब से जो मेंबर्स हैं उनको दे विल हैव टू वोट अकॉर्डिंग टू दैट. बट जो आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं या इन मैटर ऑफ फैक्ट जो आपके राज्यसभा के भी इलेक्शन होते हैं उस पे जो है विप्स कैन नॉट बी इशूड, है ना, बिकॉज जो वोट करने का अधिकार है इन दैट इट शुड बी individualistic, it should not be dictated by party lines. So remember this thing, in these cases whips cannot be issued. ठीक है. जो ऑफिस है whip का, it is not mentioned in constitution, it is not mentioned in any rule of house, or it is not mentioned in any parliament. मतलब कोई ना ये किसी कानून से बना है, ना कॉन्स्टिट्यूशन से बना है, ना किसी रूल से बना है. ठीक है. इट इज कंप्लीटली अंडर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन. और कहां से बोरो किया गया है? ब्रिटिश रूल से. ठीक है. सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ whips that are issued. वन लाइन whip में ये बोला जाता है कि यू कम एंड वोट. ठीक है. एंड यू कैन एब्सटेन इफ यू वांट, इफ यू कैन एब्सटेन फ्रॉम वोट. सेकंड इज 2 लाइन whip. इस पे बोला जाता है कि यू हैव टू बी प्रेजेंट इन हाउस, हाउएवर देयर इज नो स्पेशल इंस्ट्रक्शन इज गिवन ऑन वोटिंग. केवल जैसे 2 लाइन whip में ये इशू करता है कि यू हैव टू बी प्रेजेंट इन हाउस. और जो 3 लाइन whip होता है, दैट इज द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट. इस पे ये बोला जाता है कि यू हैव टू फॉलो पार्टी लाइन एंड यू हैव टू वोट इन दिस वे. ठीक है. मतलब इस पे आपको ये डिसाइड किया जाता है कि इस वे में आपको वोट करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट इज ट्राइबल सब प्लान. ये क्यों था? क्योंकि जो आपकी अकाउंट्स कमेटी है इट गेव अ रिपोर्ट ऑन इट. ठीक है. तो जो ट्राइबल सब प्लान है TSP, ये आपका 5th प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इट फॉर्म्स अ एनुअल प्लान ऑफ state and union territory and the funds provided it should be in proportion to ST population. So simple से इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि 100 रुपए मान लो हेल्थ एंड एजुकेशन में, if government is spending 100 rupees in health and education, then it was expected कि the benefits of it will automatically trickle down to the scheduled tribe population. ठीक है. लेकिन अब क्या होता है कि सपोज अगर गवर्नमेंट 50 रुपए, if government is spending 50 rupees on education, so 5 rupees of that 50 rupees will be earmarked for tribals. ठीक है. तो यहाँ जो 45 rupees का तो जो बेनिफिट आएगा सो आएगा, ये 5 rupees का बेनिफिट will be reserved for tribes. So that is called tribal plan. ठीक है. So funds are allocated under Consolidated Fund of India under Article 275(1) and it is a sector. अगर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो 100% फंड कहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ठीक है. एम क्या है? टू ब्रिज द गैप बिटवीन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड जनरल पॉपुलेशन. ठीक है. अब वही चीज है कि जो ये बेनिफिट्स है दे आर इन एडिशन टू व्हाट विल परलोकेट टू ओवरऑल प्लान. ठीक है. Now it is not applicable to state where tribals are more than 60%.
ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली जब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ट्राइबल्स है तो ऑब्वियसली इट विल ट्रिकल डाउन टू देम. Next is MPLAD, Member of Parliament Local Area Development Scheme. It was in news in 2018 and it was asked in 2020. ठीक है, so that is the benefit of covering 4-5 साल के करंट अफेयर्स. कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? 1993 में. किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है उसके अंदर आता है. इस पे जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जो आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसको अराउंड 5 करोड़ के जो काम है उसको सजेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, इट इज अ नॉन लैप्सेबल फंड. दो तरीके के, देयर आर टू काइंड ऑफ फंड्स, लैप्सेबल एंड नॉन लैप्सेबल फंड. ठीक है, लैप्सेबल फंड का मतलब होता है कि 100 रुपए आए, आपने 95 रुपीज खर्चा किया, जो 5 रुपए बचा इट विल अगेन गो बैक टू गवर्नमेंट. ठीक है, बट जो नॉन लैप्सेबल फंड होता है उस पे जो 5 रुपए आपका बचा है इट विल एड ऑन टू नेक्स्ट ईयर. सपोज आपके 500 रुपए आए and then this 5 rupee will be added to it, so it will become 105 rupees. So that is non-lapsable fund जो आपका MPLAD है. ठीक है, इस पे जो 15% and 7.5% जो खर्चा है it should be done for scheduled caste and scheduled tribe population respectively. ठीक है, जो भी work eligible हैं, whichever work has been sanctioned under MPLAD should start within 75 days of recommendation. और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देगा टू स्टेट गवर्नमेंट एंड MOSPI कि कैसे उन्होंने इस पैसे को खर्चा किया है जो उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लिया था. नेक्स्ट इज एथिक्स कमिटी. व्हाई इज दैट? बिकॉज जो लोकसभा की एथिक्स कमिटी है, दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल फॉर्म अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लोकसभा MPs. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग कि जो राज्यसभा के लिए देयर ऑलरेडी एग्जिस्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट. तो जो एथिक्स कमिटी होती है इस पे 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, 10 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, एंड इट मेनली एनफोर्सेस द कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट मींस द वे यू बिहेव. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ कन्वेंशन कि द वे अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव. नेक्स्ट होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल. व्हाई इट वाज इन न्यूज़? क्योंकि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है दे हैव अप्रूव्ड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, सो हु क्रिएट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल? जो आपका पार्लियामेंट है अंडर आर्टिकल 169. So under Article 169, Parliament can create it also and Parliament can abolish it also. ठीक है, state legislative assemblies जो है they can ask Parliament by passing a resolution by special majority that please form a legislative council. However, जो Parliament it is not bound by it. ठीक है, जो एक्ट है पार्लियामेंट का इट विल नॉट बी डीम्ड एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि जो एक्ट इट विल बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, मतलब लाइक ऑर्डिनरी लॉ. ठीक है, अंडर आर्टिकल 171 जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है इसके मेंबर कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ टोटल एमएलए ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मोर देन नॉट लेस देन 40. ठीक है, तो अगर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 मेंबर्स हैं तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर शुड बी 100 और लेस. ठीक है, जो वेस्ट बंगाल इट विल बिकम अ 7th स्टेट टू हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल. किस किस स्टेट्स में? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. Now next is strength of legislative assembly. ये क्यों होता है? Because जो होम मिनिस्ट्री है it has taken up the proposal to increase the strength of आंध्र प्रदेश and तेलंगाना assembly. ठीक है, तो किसी भी जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इसकी स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है? अंडर आर्टिकल 170 Parliament. Remember, state legislative themselves cannot increase or decrease their size. It is Parliament which will do it. जो maximum है it is 500 और जो minimum it is 60. But for certain states like Arunachal, Sikkim, Goa it is 30. For Mizoram it is 40 and for Nagaland it is 46. ठीक है, and for certain states of मतलब जो आपके state legislative assemblies है सिक्किम और नागालैंड के वहां पे कुछ जो सीट्स हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड आल्सो, है ना, क्योंकि उनका जो लोकल ट्रेडिशन है उसको फॉलो करने के लिए. फाइनली लोकल गवर्नेंस. लोकल गवर्नेंस में पहली न्यूज में था एजुकेशन इज द क्राइटेरिया फॉर लोकल गवर्नमेंट. जो आपका राजस्थान था एंड हरियाणा they both bought a minimum educational criteria for local governance, local government elections जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स और अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं. बट जो राजस्थान है they again removed that law, है ना, they have scrapped the education as criteria. So Supreme Court in his earlier judgment has made it clear कि जो right to contest your election, जो आप कंटेस्ट करते हो इलेक्शन, इट इज नीदर अ फंडामेंटल राइट नीदर इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट. ठीक है ना, ये आपका मौलिक अधिकार है, ना फंडामेंटल राइट है ना स्टैट्यूटरी राइट है, बट इट इज अ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ठीक है, सो बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इट कैन बी रेगुलेटेड एंड कर्टेल्ड विथ लॉ पास्ड बाय एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर. ठीक है, सो यू डू नॉट हैव एब्सोल्यूट राइट टू कंटेस्ट. So Article 243K4 में स्टेट गवर्नमेंट जो है they can lay down the qualification for local bodies. तो जो हरियाणा है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया हुआ है एक मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया. नेक्स्ट इज म्युनिसिपल बॉन्ड्स.
तो अराउंड 90+ cities जो है they have got credit ratings from agencies like CRISIL. म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं ना, they need money, है ना, so they want to raise money, so they can raise money from municipal bond. That is one way to raise money. ठीक है, अब ये होते क्या है, इनका जो रेगुलेशन है इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, और जो म्युनिसिपल बॉन्ड है इट विल एंजॉय अ टैक्स फ्री स्टेटस. ठीक है, सो देयर विल बी नो टैक्स ऑन बॉन्ड्स इफ दे कंफर्म टू सर्टेन रूल्स. ठीक है, अब क्या क्या रूल्स है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नीड टू हैव इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, मतलब they need good investment grade credit rating, and then they must contribute at least 20% of the project cost. तो अगर आप 100 रुपए का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें 20 रुपए जो है that should come from municipal corporation itself. फिर 80 रुपए का you can bring it through your municipal bonds. ठीक है, then corporation must not have defaulted in any loans in 1 year. ठीक है, तो ताकि इसका जो financial condition है it should be better. Now corporation is required to maintain full asset cover to repay principal amount. ठीक है, so they should have this much money कि जो bond है अगर उसको repay करना पड़े तो at least if they cannot pay the principal amount or sorry the interest amount, then at least अगर 100 रुपए का उन्होंने bond लिया हुआ है तो 100 रुपए उनको maintain करके चलना पड़ेगा so that they can repay the bond. Otherwise it will bring a kind of sovereign debt crisis. ठीक है, then revenue from the project for which bonds were raised are to be kept in a separate escrow account and banks or financial institution will monitor it. So suppose अगर आप एक रोड बना रहे हो और उसके लिए आपको 100 रुपए चाहिए, ठीक है, तो that's 100 rupee will not go to your personal bank account, ठीक है, of municipal corporation. There will be a separate escrow account. अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो रिवाइज व्हाट योर एस्क्रो अकाउंट इज, दे विल केप्ट 100 रुपीज इन इट, एंड जो आपके बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है दे विल मॉनिटर दैट वेदर दे आर बीइंग यूज्ड इन अ प्रॉपर वे और नॉट. ठीक है, let me see how big this federalism is. If it is not big, then we will cover it today itself. ठीक है, so we will cover federalism and then we will end the class. फेडरलिज्म में जो पहला टॉपिक है इट इज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट. ठीक है, जो आपकी रिवर्स है दे कीप फ्लोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. सो ये कंटेक्स्ट इसलिए था क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है इसने गोदावरी और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड बनाए हुए हैं अंडर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, है ना, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा जो आंध्रा एंड तेलंगाना स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने के लिए. So what are the constitutional provisions? So first is state entry जो 17 it deals with water. However जो आपका union list है it deals with the regulation of interstate rivers. ठीक है, फिर article 262 जो है it provides for कि जो interstate rivers है उसके लिए parliament जो है by law can provide a body, तो उसका जो jurisdiction होगा it will not come under Supreme Court or any other court. ठीक है, so under 262 जो government है it formed two laws. First is River Boards Act. इस पे इन्होंने रिवर बोट्स बनाने का बोला कि दे विल फॉर्म रिवर बोट्स. व्हाट दे विल डू, दे विल रेगुलेट एंड डेवलप द स्टेट रिवर्स. ठीक है, सो टिल नाउ नो रिवर बोर्ड हैज बीन फॉर्म, सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द सेकंड एक्ट इज इंपॉर्टेंट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956. इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्राइब्यूनल्स बनाएंगे. ठीक है, और जो ये ट्राइब्यूनल्स है whatever judgment that will be awarded by these tribunals will have to be followed by the state government. ठीक है, however see it has been said under 262 that the judgment of the tribunals cannot be questioned in Supreme Court. However जो state है under article 136 मतलब special leave petition and article 21 right to water they can still go to courts, है ना, और गए भी हैं. फिर अभी जो है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 गवर्नमेंट ला रही है जिसपे इंस्टेड ऑफ अभी क्या था 16 वाटर ट्राइब्यूनल्स जो थे गवर्नमेंट ने बनाए थे, बट नाउ जो गवर्नमेंट है दे आर प्लानिंग टू फॉर्म अ सिंगल परमानेंट ट्राइब्यूनल फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. ठीक है, इसके अलावा एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी भी बनाएंगे. सो इट विल बी अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल कमिटी which will resolve the disputes between the states. ठीक है, next is interstate border dispute. See we will do till borrowing power, उसके बाद we will stop the class, है ना, because अगर focus वगैरह divert हो रहा है there is no point. Interstate border disputes तो बहुत ज्यादा नहीं है, but there are certain areas जहाँ पे interstate border disputes हैं. पहला महाराष्ट्र और कर्नाटका का है ओवर बेलगाम रीजन, सेकंड पंजाब हरियाणा ओवर चंडीगढ़ जो अभी भी न्यूज में है, एंड देन हरियाणा एंड हिमाचल ओवर परवाणु रीजन. ठीक है, जो पंचकुला में है. सो ये अभी क्यों न्यूज में था, एक तो पहली चीज तो बिकॉज पंजाब हैज अगेन पास द रेजोल्यूशन इन व्हिच दे हैव आस्क्ड फॉर कंप्लीट कंट्रोल ओवर चंडीगढ़, एंड सेकंड जो असम और मेघालय है उनके जो लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स थे दे हैव सॉल्व्ड इट.
है ना, दे हैव सॉल्व्ड इट, इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट। सो ये कैसे सॉल्व करते हैं? देखो इन जनरल तो जो भी क्लेम है, जो भी whatever boundary will be decided by central government will be final boundary, so ये mostly जो आपके political negotiation है उसके थ्रू ही solve किए जाते हैं ना, there is no other legal mechanism to solve them because the central government it is the final authority in that. 7th schedule, that was a news because जो 15th finance commission था, they've asked for review of it due to new challenges of pandemic and climate change. तो जो लिस्ट 1 होती है, यूनियन लिस्ट होती है जिसपे आपके 100 आइटम्स है सबसे ज्यादा, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है 61 आइटम्स, एंड लिस्ट 3 जो है वो आपका कंकरेंट लिस्ट है जिसपे अराउंड 52 आइटम्स है, ठीक है। फाइनल इज बोरोइंग पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये क्यों है? बिकॉज जो लास्ट ईयर है, बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शन, जो लास्ट ईयर है सेंट्रल में जो बोरोइंग लिमिट है स्टेट की विच इज 3% ऑफ स्टेट जीडीपी, इट वाज इंक्रीज टू 5%, ठीक है। अब वो 5% रैंडम इंक्रीज नहीं था, आउट ऑफ दैट 5% जो 1% था, इट वाज लिंक्ड टू शोइंग रिफॉर्म्स इन 4 सेट्स ऑफ पैरामीटर्स लाइक वन नेशन और वन राशन कार्ड, ease of doing business, power distribution and urban local body revenues. So basically जो states हैं वो 3% of their GSDP they can borrow it. सेंटर ने 5% इसकी लिमिट बढ़ा दी थी बिकॉज ऑफ कोविड। उस 5% में 1% वाज विदाउट एनी, मतलब वो किसी चीज से लिंक नहीं था, इट वाज एब्सोल्यूट की, है ना, 4% हो गया था। और जो 1% और था जो आप बोरो कर सकते हो, बट ओनली अगर आप इन 4 में से एक पैरामीटर में यू आर डूइंग बेटर वर्क, ठीक है। कौन कौन सा? वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन या अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यूज, ठीक है। अब बोरोइंग पावर जो है सेंटर और स्टेट की, वो क्या होती है? सेंटर की होती है, दोनों के अंडर आर्टिकल 292 होती है। अंडर जो सेंटर की है, दे हैव अनरेस्ट्रिक्टेड पावर टू बोरो, मतलब दे कैन borrow as much as they want, है ना, subjected to limit set by parliament, and there is no restriction. They can borrow it domestically also and they can borrow it from abroad also, तो वर्ल्ड बैंक, IMF यहाँ से भी borrow कर सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट है, इट वाज आस्क्ड इन 2020 यूपीएससी आल्सो, जो स्टेट गवर्नमेंट है दे कैन ओनली borrow it domestically, सिर्फ विद इन कंट्री दे कैन borrow it, and they can borrow it upon the security of जो आपका consolidated fund of state है under article 293, first thing. Second, they cannot raise the borrowing without center's consent if they have any loan of outstanding which is repayable to government of India, ठीक है। तो अगर if they are borrowing so if they have any loan which they have to repay to a government of India, in that case they cannot borrow more except for by asking the central government, ठीक है। So both center and state they can borrow the money from both, आप गवर्नमेंट से भी borrow कर सकते हो and then from प्राइवेट सेक्टर या डोमेस्टिक जो आपके हाउस होल्ड्स हैं वहां से भी borrow कर सकते हो, ठीक है।